Hello everyone, this is Sachin Upadhyay and you are most welcome at ATC Digital Learning Platform. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B डिस्कस किया था and we have been gone through all the problems. I hope you would have solved all the problems whatever we have left, right? So इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. What is multiplication of rational number? So see, if a upon b and c upon d are two rational numbers, a upon b and c upon d are two rational numbers, so the product, you can say multiplication is also called product. The product of a upon b and c upon d will be, a upon b को multiply करेंगे c upon d से, so यहाँ पे क्या होगा, a का multiplication होगा c से, means numerator will be multiplied to the numerator of other rational number and denominator will be multiplied to denominator of other rational number. So that will be the multiplication of rational number, right? So we can understand it with the help of examples also. If we take two rational number, if minus 5 upon 7 and 3 upon 5 are two rational numbers, are two rational numbers. So if we find out product of both rational number, minus 5 upon 7 is multiplied by 3 upon 5. So what will be, minus 5 will be multiplied by 3 and 7 will be multiplied by 5, right? So we can say that will be minus of 15 and that will be 35, or we can divide it by 3, so that will be by 5, that will be minus 3 and that will be 7. So result is minus 3 upon 7. So the product of minus 5 upon 7 and 3 upon 7, which are rational numbers, that is minus 3 upon 7, right? So minus 3 upon 7 is also a rational number. So this is the multiplication of two rational number or more than two rational number. With this method we can multiply more than two rational number or two rational number, right? इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर. Properties of multiplication of rational numbers. Rational numbers. Properties of multiplication of rational number. We had discussed properties of addition of rational number, right? So now we are going to discuss properties of multiplication of rational number. So first property is closure property. Closure property, or we can say closure law. We have discussed closure property, commutative property, associative property in addition also, right? So we are going to discuss closure property in multiplication, in the case of multiplication. So if a upon b and c upon d are two rational numbers, are two rational numbers, so according to closure property, the product of both rational number, it means a upon b and c upon d is equal to a upon b multiplied by c upon d. This also will be a rational number.
ये भी एक रैशनल नंबर होगा, विल बी अ रैशनल नंबर. So this is the closure property. In closure property, if we multiply two rational number or more than two rational number, so we can say the product of two rational number is also a rational number. This is the closure property. For example, if minus 1 upon 7 and minus 8 upon 9, they are the two rational number, right? So if we multiply both rational number, so minus 1 upon 7 will be multiplied by minus 8 upon 9. So इनका जो product होगा that will be minus and there are another minus that will be plus. So that is 8 upon 9 7 ja 63. So 8 upon 63 is also a rational number. This is the closure property in which if we multiply two rational numbers, so their product will be also a rational number. This is the closure property of multiplication of rational number, or we can say rational numbers are closed under multiplication. Rational numbers are closed under multiplication. Now we will discuss second property, that is commutative property. Commutative property of rational numbers under multiplication, right? So according to commutative property, if a upon b and c upon d are two rational numbers, if a upon b and c upon d are two rational number, so according to commutative property, a upon b multiplied by c upon d is equal to c upon d multiplied by a upon b. This is the commutative property of rational numbers under multiplication, right? If we multiply two rational number, so their result will be same, either we change the order of both rational number. It means a upon b c upon d का multiplication वही होगा जो c upon d को a upon d से b से multiply करने पे आएगा. For example, suppose two rational numbers, we are taking two rational number, one is 7 upon 11 and another one is 12 upon 13. If 7 upon 11 and 12 upon 13 are two rational numbers, So according to the commutative property of multiplication, what will be there? 7 upon 11 is multiplied by 12 upon 13, that will be equal to, if 12 upon 13 is multiplied by 7 upon 11, their result will be same. It means LHS will be equal to RHS, right? So their result will be same. It is the commutative property of rational numbers under multiplication, or we can say rational numbers are commutative under multiplication, right? So we had discussed closure property, second one is commutative property, and next one is whatever we have to discuss, that is associative property. Associative property of rational numbers under multiplication. So according to associative property, that is property number 3, if there are three rational numbers, a upon b, c upon d and
E upon F are three rational numbers. A upon B, C upon D and E upon F are three rational numbers. So according to associative property of rational number, A upon B को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, if A upon B is multiplied by C upon D into E upon F, so that result will be equal to, if A upon B multiplied by C upon D, first of all, then we multiply E upon F to the multiplication of A upon B and C upon D, right? So this is the associative property of rational numbers under multiplication, or you can say associative property of multiplication of rational number, right? A upon B multiplied by C upon D multiplied by E upon F. So what we are doing in this case, we are just changing the order of rational numbers. In LHS, left hand side, first we multiply C upon D and E upon F. पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों रैशनल नंबर्स को, देन जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करने वाले A अपॉन B, मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर्स, राइट? और RHS में राइट हैंड साइड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड रैशनल नंबर, देन थर्ड रैशनल नंबर विल बी मल्टीप्लाई टू द resultant of first and second rational number, right? So this is the associative property of rational number. If we take an example, if we take three rational numbers, suppose 1 upon 2, 3 upon 5 and 7 upon 8 are three rational numbers. So according to associative property, if 1 upon 2 is multiplied to the multiplication of 3 upon 5 and 7 upon 8, so it will be equal to, if 1 upon 2 is multiplied by 3 upon 5 and then 7 upon 8 is multiplied to the multiplication of 1 upon 2 and 3 upon 5. So both result will be same, you can check, right? So we can check it here also. See, if 1 upon 2 is multiplied to 3 upon 5 and 7 upon 8, first we are solving LHS. So what will be there? 7 3 ja 21 and this is 8 5 ja 40, and this will be equal to 21 upon 80, 42 ja 80. And if we solve right hand side, that means 1 upon 2 will be multiplied to 3 upon 5, so that will be, first of all, 3 upon 10 is multiplied to 7 upon 8. So you can see 3 7 ja 21 and 10 8 ja 80. So LHS and RHS both will be equal in the case of associative property, whether we are multiplying first two rational number then second, or first another two rational number then last one, right? So result will be always same. This is the associative property. But most important part is that when you are solving the equation, right, in your examination or from your book, so you need to mention which property you are using. If you are using associative property, so you need to mention is, this is the associative property, or this is the commutative property. You need to mention it properly, right? Fourth property is existence of
existence of multiplicative identity. Multiplicative identity. In the last lecture, we had discussed existence of additive identity and existence of additive inverse. In this lecture, we are discussing existence of multiplicative identity. What is multiplicative identity, right? See, 0 was the additive identity for all the rational numbers. 0 was the additive identity of all the rational numbers, because if you are adding 0 with any rational number, the result will be always that rational number, right? So in the case of multiplicative identity, as you all know, this is the case of multiplication. So in the case of existence of multiplicative identity, 1, or you can say if a upon b is any rational number, is a rational number, if there is any rational number, right? So 1 is called 1 is called the multiplicative identity. Multiplicative identity for all the rational numbers. 1 is called multiplicative identity for rational numbers. As additive identity is same, that is 0 for all the rational number, similarly multiplicative identity is also same. Multiplicative identity is 1 is for all the rational number. So if we multiply any rational number with 1, so the result will be again that rational number. So this is multiplicative identity. It means 1 is called multiplicative identity. Multiplicative identity. 1 is called multiplicative. So additive identity, that is 0, and multiplicative identity, that is 1. They are the same for all the rational numbers. So property number 5. So you need to just remember that additive identity is 0 and multiplicative identity is 1, right? So property number 5 is existence of multiplicative inverse. Existence of multiplicative inverse, right? As we had studied existence of additive inverse, similarly we will study in the case of multiplication existence of multiplicative inverse, right? So if a upon b, or you can say every rational number has its multiplicative inverse. Every rational number, or if you want to define it, you can say every non-zero. It means the rational number should not be 0. Every non-zero rational number has its multiplicative inverse. Has its multiplicative inverse. हर नॉन जीरो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. So if you want to know what is the multiplicative inverse of any rational number,
So that will be what? Reciprocal. Reciprocal of rational number. Reciprocal of rational number. So every non-zero rational number has its multiplicative inverse, that is reciprocal of rational number, such that अगर कोई रैशनल नंबर हम कंसीडर करते हैं दैट इज a अपॉन b, सो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा दैट विल बी b अपॉन a. इट मीन्स a अपॉन b इज a rational number and we are taking reciprocal of a upon b, that is b upon a, and if a upon b is multiplied by b upon a, so that will be what? That will be result will be 1 because b will be cancelled to b or a will be cancelled to a. So again that will be b upon a multiplied by a upon b, right? So multiplicative inverse of any non-zero rational number is the reciprocal of that rational number. वो उसका reciprocal होता है. So this is the multiplicative inverse. So if we want to see the example, we are taking two rational numbers, suppose minus 3 upon 5. Minus 3 upon 5 is a rational number, right? And we need to find out the multiplicative inverse of minus 3 upon 5. So multiplicative inverse means reciprocal of minus 3 upon 5. So that will be what? Or you can say multiplicative inverse of minus 3 upon 5 is equal to 5 upon minus 3, because if you multiply minus 3 upon 5 to 5 upon minus 3, the result will be 1. result 1 होने वाला. It means multiplicative inverse के केस में rational number को उसके reciprocal से multiply करने के बाद में result 1 आएगा. या अगर आपको reciprocal find out करना है किसी भी rational number का, so you need to think by which rational number we have to multiply to the given rational number, जिससे हमारा result जो हो 1 आ जाए, right? जिससे अगर multiplication करने पे वो 1 आता है, so that will be the reciprocal of that rational number. In this case minus 3 upon 5 में अगर आप 5 upon minus 3 से multiply कर देते हो, it means मैंने कुछ नहीं किया, just इसका reciprocal किया है, so result will be 1. It means 5 upon minus 3 is the reciprocal of minus 3 upon 5. अगर 5 upon 3 रैशनल नंबर होता तो 5 upon 3 का रेसिप्रोकल minus 3 upon 5 होता. ठीक है, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए है. So we had studied, first one is closure property, second one is commutative, third one is associative, fourth one is existence of multiplicative identity, and fifth one is existence of multiplicative inverse. First property was closure, commutative, second was commutative, third one is associative, fourth one is multiplicative identity, and the fifth one is multiplicative inverse, right?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. Property of zero. What is property of zero? See, if any rational number is multiplied with zero, अगर किसी भी rational number को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी rational number हो या कोई भी नंबर हो, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, कुछ भी, कोई भी नंबर हो, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? जीरो. किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद, होने के बाद में रिजल्ट जीरो देता है, राइट? तो a अपॉन बी कोई भी रैशनल नंबर हो, इज अ रैशनल नंबर, so according to the property of zero, if a upon b is multiplied by zero, so result will be zero, or zero is multiplied to a upon b. Means if any rational number is multiplied to zero, result क्या आने वाला है? Result always will be zero. That is the property of zero in the case of multiplication, right? बस इसमें ये ध्यान रखना है, किसी भी rational number को या किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज विल बी जीरो. बट इफ एनी रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड टू वन, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, result will be what? Result will be that rational number. See, earlier we discussed multiplicative inverse, right? So multiplicative inverse, that is the reciprocal of rational number. Additive inverse में हमने डिस्कस किया था, additive inverse, अगर जीरो का हमको additive inverse फाइंड आउट करना हो, so जीरो का additive inverse क्या होता है? जीरो ही होता है, बिकॉज जीरो का एडिटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर, जीरो का नेगेटिव क्या होगा? जीरो ही होगा. सो इसलिए जीरो ही एडिटिव इनवर्स होगा जीरो का, राइट? सिमिलरली अगर बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वी टॉक अबाउट जीरो, इफ वी टॉक अबाउट जीरो, सो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल, राइट? तो जीरो इज व्हाट? जीरो अपॉन वन. जीरो को लिखा जा सकता है, जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरो अपॉन वन, दैट इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. And if we find out multiplicative, or you can say reciprocal of 0 upon 1, that will be 1 upon 0. And we know definitely 1 upon 0 will be what? 1 upon 0 is undefined. It cannot be defined. इसको define नहीं किया जा सकता, because if you divide 1 from 0, right, so the result will be infinite, that is undefined. So similarly, or we can say multiplicative inverse of 0 does not exist. 0 का multiplicative inverse exist नहीं करता, ठीक है? Second one is if we talk about 1, 1 का multiplicative inverse क्या होगा? ठीक है, see, 1 is also a rational number because it is 1 upon 1, and multiplicative inverse of any rational number is what? Reciprocal. So reciprocal of, or you can say reciprocal of 1 or multiplicative inverse of 1 is equal to what? Reciprocal of 1, that is again 1 ही होने वाला है, because 1 is also 1 is that number by which you will multiply to 1 and the result will be 1. Multiplication के केस में result 1 आना चाहिए, तो reciprocal of 1 और multiplicative inverse of 1 होगा. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही वह नंबर होता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है. 0 एक ऐसा रैशनल नंबर होता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. And if we talk about third, that is -1. So -1 is also, -1 को लिखा जा सकता है -1 upon 1. And if we talk about reciprocal, of -1 upon 1 is equal to what? 1 upon -1. It means again
this value is minus. So multiplicative inverse of minus 1 also will be again that rational number. So multiplicative inverse of minus 1 is equal to minus. So there are two rational numbers 1 and minus 1, जो जिसका multiplicative inverse वही rational number होता है जो कि already है, and there is only one rational number 0 जिसका multiplicative inverse exist नहीं करता, इसलिए हमने पहले ही बोला था that should be non-zero rational number. Rational number should be non-zero, right? अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. अच्छा ये ठीक है. अब हम लोग कुछ switch off. You need to wait. Till then we can discuss distributive, or we can say distribution of multiplication over addition. Distribution of multiplication over addition, right? So multiplication को अगर addition पे हम distribute करें, so what will be there? So see, we are taking three rational numbers, a upon b, c upon d and e upon f are three rational numbers. Three rational numbers. So if a upon b is distributed to the sum of c upon d plus e upon f, so according to the distributive property, that will be what? A upon b. First a upon b will be multiplied to c upon d. A upon b multiplied to c upon d. Then a upon b will be multiplied to e upon f. If a upon b is multiplied to the sum of c upon d plus e upon f, so a upon b first will be multiplied to c upon d, then a upon b is multiplied to e upon f. So this is the distributive property of what? Distribution of multiplication over addition. This is the distribution of multiplication over addition, right? So we can take example. If we take three rational numbers, suppose we have taken 3 upon 5, we are distributing 3 upon 5 to the sum of 4 upon 3 plus 1 upon 5. We are distributing 3 upon 5 to the sum of 4 upon 3 plus 1 upon 5 is equal to, that is, first 3 upon 5 will be multiplied to 4 upon 3, then 3 upon 5 will be multiplied to 1 upon 5, right? So in this case, LHS and RHS both will be equal. We can check it. See, first of all, 4 upon 3 and 1 upon 5, they will be added. So 4 upon 3 and 1 upon 5 will be what? LCM of 3 and 5 is 15, and there is 5 4 ja 20 plus 5 3 ja 15, and there is 3. So that will be 3 upon 5 multiplied with 23 upon
50. So that is 23 3 ja, that is 69, and 15 5 ja 75. This is left hand side. The result of left hand side is 69 upon 75. We can just change it in the lowest form also by dividing 3. 3 से divide कर सकते हैं इसको, तो ये होगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, and this is 25. 23 upon 25. Now we need to solve right hand side. So 3 upon 5 multiplied by 4 upon 3. So multiplication of this will be 12 upon 15 and plus that is 3 upon 25. So LCM of 15 and 25 will be 75, and this is 12 5 15 5 is 75, and 5 12 is 60, plus 3 3 is 9. This is 69 upon 75. Again this is 23 upon 25. So left hand side and our right hand side both will be equal if we distribute any rational number to the sum of two rational numbers. So this is distribution of multiplication over addition, right? So this was the last property under multiplication. After that we will solve some questions from your exercise. कुछ questions हम लोग करेंगे. I think two exercise we have completed, right? So we will solve the questions of third exercise. Associative property. Before that we need to discuss division of rational numbers. So we can discuss division of rational numbers also, that is not an issue. That is a very simple topic. Division of rational number. Division of rational number. It means if any rational number is divided by any non-zero rational number, right? अगर कोई rational number a upon b हो और इसको हम डिवाइड करते हैं किसी नॉन ज़ीरो से, you need to just be careful that rational number should be non-zero. Otherwise अगर वो ज़ीरो होता है, so that will be what? Result will be undefined हो जाएगा. So a upon b is divided by any non-zero rational number, suppose c upon d. So what will be there? We know that multiplication and division both are reciprocal. So a upon b, यहाँ पे हम सिंबल लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का, एंड c अपॉन d विल बी कन्वर्टेड और विल बी द रेसिप्रोकल, दैट विल बी d अपॉन c. सो अगर हमको फाइंड आउट करना है किसी का व्हाट, किसी भी रैशनल नंबर का डिवीजन, सो हम उसको डिवीजन को चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और जो दूसरा रैशनल नंबर होगा जिससे हमको डिवाइड करना है, दैट कैन बी कन्वर्टेड और दैट कैन बी रिटन इन द रेसिप्रोकल फॉर्म, दैट इज d अपॉन c. If we talk about examples, so suppose if we have to divide 5 upon 3 by 1 upon 2, 5 upon 3 has to be divided by 1 upon 2, so it can be written as 5 upon 3 multiplied by 2 upon 1. So 5 will be multiplied by 2 and 3 will be multiplied to 1, so that is result will be 10 upon 3. So this is the division of rational numbers, right? So now we need to solve the questions. डिवीजन में केवल और केवल क्लोजर प्रॉपर्टी है, राइट? डिवीजन के केस में, इन द केस ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, केवल क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, बाकी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती. कम्यूटेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी. ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर that will be
exist, right? So क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर a अपॉन b कोई रैशनल नंबर होता है, उसको किसी भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, सपोज c अपॉन और एनी रैशनल नंबर c अपॉन d से, सो इट मीन्स a अपॉन b दैट विल बी d अपॉन c, ये भी एक रैशनल नंबर होगा. सो दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. Other properties, commutative, associative and distributive, they do not exist in the case of division. So we just come on the exercise 1c. Question number 1 is find the products 4 upon 9 into 7 upon 12. So these are very simple questions. You can solve all the questions, right? You need to just multiply both rational numbers and you need to be careful of the signs which have been used here, that is positive or negative. Question number 2 is find the multiplicative inverse or reciprocal. Question number 2 में हमको multiplicative inverse find out करना है. So we just saw that multiplicative inverse is the reciprocal of rational numbers. Multiplicative inverse is the reciprocal of rational number. So first rational number is minus 17 upon 12. minus 17 upon 12. This is the first rational number जिसका multiplicative inverse आपको find out करना है, ठीक है. तो minus 17 upon 12 का जस्ट अगर हम reciprocal करते हैं, it means multiplicative inverse find out करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12 upon minus 17 हो जाएगा. बिकॉज अगर आप minus 17 upon 12 को मल्टीप्लाई करते हो 12 upon minus 17 से, सो ये का रिजल्ट 1 आने वाला है, ठीक है. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 12 अपॉन माइनस 17 होगा. हो सकता है आपके जो आंसर में इसको दिया होगा माइनस 12 अपॉन 17. रिजल्ट ये भी हो सकता है माइनस 12 अपॉन 17. माइनस 12 अपॉन 17 इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमने बताया था, वी हैड डिस्कस्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा दैट कैन नॉट बी नेगेटिव. वो नेगेटिव नहीं होता, हो सकता है ऑलवेज पॉजिटिव होगा. तो इफ़ यू टॉक अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म, सो माइनस 12 अपॉन 17 ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, राइट. आंसर कैन बी एनी ऑफ द रैशनल नंबर वट एवर, बट यू वुड ट्राई टू राइट दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. आप यही लिखने की कोशिश करोगे, राइट. और यू कैन राइट इट ऑल्सो, so you do not need to get confused of your answers. Second one is minus 16. Minus 16 is the second rational number. So इसका जो reciprocal होगा 1 upon minus 16, or you can say minus 1 upon 16. 0 upon 2. 0 upon 2 is a rational number. See, 0 upon 2 is a rational number, right. सो 0 अपॉन 2 एक रैशनल नंबर है. इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज वो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 0 हो जाएगा, ठीक है. बट 2 अपॉन 0 क्या एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. इट मीन्स ये अनडिफाइंड है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलेगा. 0 अपॉन 2 ये मतलब इसका 0 ही है, ठीक है. तो ये 0 का रैशनल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अनडिफाइंड होता है. सो दैट नॉट बी, ये 0 नहीं होगा, इसका अनडिफाइंड हो जाएगा. फोर्थ वन इज माइनस 3 अपॉन 5. माइनस 3 अपॉन 5 इज 3 अपॉन 5. 3 अपॉन 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 अपॉन 3. 2 अपॉन माइनस 5. 2 अपॉन माइनस 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस 5 अपॉन 2. Similarly, third question is find the quotient. Quotient means you need to find out, you need to divide first rational number by second one. 17 upon 8 will be divided by 51 upon 4. So we had discussed how to divide any rational number by any other non-zero rational number. First question we are discussing. First question. First one is 17 upon 8 is to be divided by 51 upon 4. 51 upon 4. So 17 upon 8, this can be written as 4 upon 51. So that will be what? 4 to the
8, 17, 3 जा 51. That will be 1 upon 6. So division is 1 upon 6 and this is what? This is quotient. इसी को quotient बोलते हैं. जिसमें डिवाइड करना है 17 upon 8. This is called what? Dividend. इसको डिविडेंड बोलते हैं. 51 upon 4 is called divisor. The rational number by which we are going to divide, that is called divisor. The rational number in which we will divide to the second by the second rational number, that is dividend. And the result which we just find out, that is what? That is quotient. This is called quotient, right? And you know whatever is left, that is remainder. So in this problem you need to find out quotient. So rest questions will be solved by you. आपको solve करना है सारे questions को. Fourth question है, name the property of multiplication illustrated by each of the following statements. Name the property. आपको प्रॉपर्टी को मेंशन करना है जिस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वेदर इट इज क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. फर्स्ट रैशनल नंबर इज -8 upon 9 इंटू -3 13 upon 7. इसका जस्ट क्या किया गया है? सी फर्स्ट क्वेश्चन इज -8 upon 9 into -13 upon 7 is equal to -13 upon 7 multiplied by -8 upon 9. Right. So if this is A upon B, this is C upon D. So again this is C upon D and this is A upon B. Right. So this is what? This is the commutative property. इन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने इसको डिस्कस किया था. अगर ऑर्डर को चेंज करके करते हैं तो LHS और RHS पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बोथ विल बी इक्वल. सो दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एज यू ऑल नो. थर्ड विल बी व्हाट? थर्ड इज अभी हमने डिस्कस किया है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. Right, so you need to mention all the properties. Fourth one is, we all know, multiplicative identity. Fifth one is, that is existence of, or you can say multiplicative inverse, because result is 1. The result 1 आ रहा है and -13 upon 17 is multiplied to the reciprocal 17 upon -13, so result inverse, that is multiplicative inverse. Last one is -9 upon 7 is multiplied by 0, so that is the property of 0. Fifth question है, verify whether the given statement is true or false. So if -8 upon 9 is divided by -4 upon 3, will be equal to -4 upon 3 or divided by -8 upon 9. So that will be false, because केवल और केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं. सब्ट्रैक्शन के केस में या डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती. ये फॉल्स होगा. सेकंड क्वेश्चन, -7 upon 24 divided by 3 upon -16, this will be also false, because again same property has been used. Third, -3 upon 5 divided by, so we had discussed in the case of division में केवल और केवल क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, बाकी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं. ठीक है, तो ये भी फॉल्स ही होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है, वो एग्जिस्ट नहीं करती. सिक्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता? हमने डिस्कस किया है, दैट इज 0 इज द रैशनल नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है. 0 इज द रैशनल नंबर. यहाँ पे ब्लैंक्स है. आर द रैशनल नंबर्स व्हिच आर इक्वल टू देयर ओन रेसिप्रोकल्स. ऐसे कौन से रैशनल नंबर्स हैं जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं? So we had discussed 1 and -1.
दे आर द टू रैशनल नंबर्स जिनका रेसिप्रोकल वही रैशनल नंबर होता है. सो द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, किसी भी रैशनल नंबर, सपोज कोई रैशनल नंबर है a अपॉन b और उसी के रेसिप्रोकल b अपॉन a का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होने वाला है, राइट, दैट इज 1. द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा. अगर रैशनल नंबर पॉजिटिव है a अपॉन बी, सो इसका रेसिप्रोकल भी b अपॉन a, ये भी एक पॉजिटिव होगा. नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो उसका पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा. द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर. कौन सा नंबर ऐसा है जो कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता, तो जीरो वी हैड डिस्कस, जीरो क्योंकि किसी भी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, तो जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका किसी भी का रेसिप्रोकल नहीं होता. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर 1 अपॉन ए इज, 1 अपॉन ए एक रैशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब 1 अपॉन ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए ही होगा, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए टू ए दैट इज 1, रिजल्ट विल बी 1. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए इज 1. क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -7. इस टाइप के क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकेंड एक्सरसाइज में डिस्कस किए हैं. वी नीड टू डिस्कस 2 क्वेश्चंस हियर. क्वेश्चन नंबर 7 is the product of two rational numbers is -7. दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट -7 है. If one of the numbers is -8 upon 11, find the other. See, question number 7. The product of two rational number is -7. -7 दोनों रैशनल नंबर का प्रोडक्ट है. One of the numbers is -8 upon 11. -8 अपॉन 11 वन रैशनल नंबर, सेकेंड रैशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है. सो हमने डिस्कस किया था कि वट एवर वी हैव टू फाइंड आउट दैट वुड बी कंसीडर एज x, राइट. सो वी नीड टू फाइंड आउट सेकेंड रैशनल नंबर. सो लेट x बी द सेकेंड रैशनल नंबर, बी द सेकेंड नंबर. Let x be the second rational number, or you can write let the second number is x. So if -8 upon 11 is multiplied to x, result is -7. So you need to find out the value of x from this equation. So first of all, minus r, left hand side and right hand side both will be cancelled out. x की वैल्यू क्या होगी, 8 upon 11 will be transferred to 7, means right hand side. So that will be what, 7 will be multiplied to 11 and 8 will be multiplied to 1. So that is 77 upon 8. So x की वैल्यू आने वाली है, आ गई है 77 upon 8. सेकेंड रैशनल नंबर इज 77 अपॉन 8, जिसको हम मल्टीप्लाई करें अगर किससे, -8 अपॉन 11 से, सो इसका रिजल्ट -7 आने वाला है, राइट. सो दिस इज द प्रॉब्लम. ऐसे आपको सॉल्व करना है. वट एवर यू हैव टू फाइंड आउट, उसको जस्ट कंसीडर करना है कि वो वैल्यू x है. क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16 अपॉन 9. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -4 अपॉन 3, फाइंड द अदर. सिमिलर क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है. बाई वॉट रैशनल नंबर मस्ट 1 अपॉन 26 बी डिवाइडेड. ठीक है, डिवीजन पे भी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Question is, by what rational number must 1 upon 26 be divided? 1 upon 26 को किस रैशनल नंबर से डिवाइड करना है to get -8 upon 39, right? What is the rational number by which 1 upon 26 is divided to get -8 upon 39? So we will consider, let the number, or you can write let the required number is equal to
x. So if you divide 1 upon 26 by x, so result is minus 8 upon 39. अब आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू. तो सी, इसको लिखा जा सकता है 1 upon 26 multiplied by, that is x upon 1, and that can be written as 1 upon x is equal to minus 8 upon 39, right? So 1 upon 26 multiplied by 1 upon x is equal to minus 8 upon 39. We just changed that sign of division into the sign of multiplication, and this was x upon 1 and it has been 1 upon x. Now see, if you have to find out the value of x, you need to transfer 1 upon 26 to the right hand side. So that will be 1 upon x is minus 8 upon 39 multiplied by 26 upon 1. When 1 upon 26 will go to the right hand side, so that will be reciprocal. 26 will be multiplied to minus 8, 1 will be multiplied to 39. It means cross multiplication हो जाता है. So 1 upon x की वैल्यू minus 8 and 26, and this is 39. So 26 and 39 can be divided by 13. 13 2 ja 26, 13 3 ja 39. So that is minus 8 multiplied by 2 upon 3 multiplied by 1. So this is minus 16 upon 3. So this is the value of 1 upon x, not x. आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू. So that will be, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 upon minus 16. This is the second number, और this is the number by which 1 upon 26 को हम डिवाइड करेंगे, जिससे रिजल्ट minus 8 upon 39 मिलने वाला है. ठीक है. So whatever we had discussed, आपको जस्ट कंसीडर करना है कि वो वैल्यू x है, and just put the value of x, or you can say write the equation according to the question. Whatever question has been asked, आपको 1 upon 26 या कोई question हो, उसको as it is लिख देना है. ठीक है. Then you have to find out the value of x. वही वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू होगी. Question number 10. Divide the sum of 30 upon 5 and minus 12 upon 7 by the product of this. पहले आप प्रोडक्ट लेंगे माइनस 31 अपॉन 7 और 1 अपॉन माइनस 2 का, उससे डिवाइड करना है 13 अपॉन 5 और माइनस 12 अपॉन 7 के सम को. स्वयं करना है खुद. डिवाइड द सम ऑफ 65 अपॉन 12 एंड 8 अपॉन 3 बाय देयर डिफरेंस. So first of all, you need to find out the sum of 65 upon 12 and 8 upon 3. Then you have to find out the difference of these rational numbers. Then you have to divide the difference of these rational numbers, sorry, the sum of these rational numbers by the difference of these rational numbers. ठीक है. Question number 12. Find the cost of 3:2 upon 5 meters of cloth at 63:3 upon 4 per meter. किसी क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो 63 अपॉन 63:3 अपॉन 4 पर मीटर है, और आपको फाइंड आउट करना है 3:2 अपॉन 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट. तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दी हुई है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट 3:2 अपॉन 5. दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट विच इज 36:3 अपॉन 5 मीटर लॉन्ग एंड 16:2 अपॉन 5 मीटर ब्रॉड. राइट. एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पार्ट का लेंथ दिया हुआ है. राइट. लेंथ इज गिवन एंड breadth is given, so you need to find out area. So we know that the area of rectangle is length into breadth. You need to multiply both given value, you will get the answer. Find the area of a square plot of a land whose each side measures is 8:1 upon 2 meters. Right. स्क्वायर की एरिया फाइंड आउट करनी है जिसका हर साइड 8:1 upon 2 मीटर का है. तो आप स्क्वायर की एरिया होती है साइड का स्क्वायर. If there is a square, so area of a square is, if side is a, so area of a square is a square. Right. So whatever the value of side, you need to square the value of side, or you need to multiply it.
A chord of length 71:1/2 has cut into 26 pieces of equal length. What is the length of each piece? So हर पीस की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है. सो कोई अगर कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड की लेंथ है 71:1/2 71:1/2 meter or centimeter, that is not given, and it has to be divided into 26 pieces of equal length. 26 pieces of equal length. So what is the value of each length? So what you are going to do, you need to divide 71:1/2 will be divided by 26. को 26 से divide करना है. You will get the value of each length, that will be in meter or centimeter. Question number 16, that is last question of this exercise. The area of a room, किसी रूम की एरिया दी हुई है 65:1/4 square meter. The area of a room question number 16. The area of a room, किसी रूम की एरिया है 65:1/4 square meter. This is the area. If its breadth is 5:1/6, breadth is equal to 5:1/6 meter. Find its length. आपको length find out करनी है. So we know area is equal to कितना होता है, area is equal to length into breadth, right? Area is given 65 is equal to 1/4 and breadth is also, length has to be find out. Breadth is given 5:1/6, right? You need to solve this equation. 65:1/4 will be divided is to 1/4, इसको डिवाइड कर लेना है 5:1/6 से. ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन. सो दैट विल बी 5:1/6. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज इट, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. 65 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4, so that will be 260 and this is 261. 261/4 and this is 6 5 the 30, 31/6, right? So again 6 will be multiplied to 261 and 31 will be multiplied to 4. So 261 into 6/4 into 31. आपको ये solve करना है and then you have to convert it standard form, that will be required length of the room, right? So we had gone through all the questions which we have left. You have to solve all the questions. जो भी हमने छोड़ा है आपको solve करना है. And next lecture में हम लोग study करेंगे method of finding a rational number between two given rational number. It means अगर किसी भी, जैसा कि हमको पता है कि there are infinite number of rational number between two rational number. अगर दो rational number हैं suppose 1 and 2, तो इसके बीच में infinite number of rational numbers exist करते हैं. So if you have to find out one rational number, two rational number or more than 2 3 5 4 rational numbers between two rational numbers, so how we will find out, right? Next lecture में हम लोग discuss करते हैं. Till then you have to solve all the problems, then you have to tell, right? Thank you so much.